हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का लेसन 3 जिसका नाम है गोलू ग्रोज अ नोज। इस वीडियो में हम लेसन की समरी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 2 ब्रिंगिंग अप कारी के समरी, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ की समरी करेंगे। The story Golu Grows a Nose is regarding Golu, a baby elephant that has a bulgy nose. Golu lived at a time when elephants were without trunks. Furthermore, Golu was a curious elephant who had a lot of questions. Golu was interested in particulars about knowing crocodiles and their eating habits. Finally, Golu meets a crocodile who asks Golu to come close to the river. The crocodile then takes advantage of the opportunity and catches Golu by the nose. The crocodile then pulls Golu in and tries to eat him. A python tries to help Golu to him escape from the crocodile. However, something remarkable happens during this struggle. During this intense struggle of pulling and pushing, the nose of Golu grows very long. Ultimately, Golu comes to realize that dangers of trusting strangers. Moreover, he also learns about the benefit of having a long nose. At a long time, elephants were devoid of trunks. Furthermore, in place of trunks, the elephants had bulgy noses. Golu was a baby elephant who was by nature curious and always had a lot of questions. Golu once asked an ostrich that why it doesn't fly like other birds. He also asked a question to his big uncle, the hippopotamus, that why his eyes are so red. On meeting a manna, Golu asked, "What does a crocodile eat for dinner?" Most noteworthy, Golu had no experience of a crocodile. He had never before seen a crocodile and had no idea about its diet. Consequently, Golu began to grow more and more curious regarding the crocodile and its eating habit. In order to search for the after answer, Golu decided to visit the great Limpopo River due to the advice given by the manna. On his way to the river, Golu happened to meet a python, so Golu asked Python the same crocodile question but received no answer from the python. However, the python decided to quickly follow Golu. This would turn out to be a very important decision, as we would find out later on. Finally, Golu reached the river. On researching the river, Golu noticed a big log of wood. As it turns out, this log of wood was actually the crocodile. The crocodile winked at Golu and asked him that he has ever met a crocodile before. The crocodile explains that he was a crocodile and he sheds crocodile tears so as to show that it was true. Golu was certainly frightened at his movement. In spite of the fear, Golu asked the crocodile that hat does he have for dinner. The crocodile then decided to trick Golu into coming near him. He asked Golu to come near so that he can whisper the answer. As Golu went near him, the crocodile quickly grabbed him by the nose. The crocodile then
told Golu that he would be his dinner. Watching this, the python came to help Golu. The python told Golu to pull hard. Now began the struggle of pushing between the crocodile and Golu. The python quickly coiled himself around Golu and began to pull him. During this struggle, the nose of Golu kept getting larger. Ultimately, Golu became free from the crocodile, but his nose became 5 feet long. Golu spent a long time for his nose to shrink. Then the python reminded him of the benefits of long nose. In the end, Golu thanked the wise python and went home. Golu Grows a Nose Summary is a story that tells us that curiosity, although useful, can lead to disastrous consequences. अब करते हैं हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, whom does गोलू आस्क why don't you ever fly like other birds? गोलू ने किससे यह पूछा, तुम अन्य पक्षियों की तरह कभी क्यों नहीं उड़ते? इसका आंसर है गोलू आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द ऑस्ट्रिच. गोलू ने यह प्रश्न एक शुतुरमुर्ग से पूछा. क्वेश्चन 2, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज? गोलू के कौन से अंकल की आंखें लाल थीं? इसका आंसर है गोलूज हिप्पोपोटामस अंकल हैड रेड आइज. गोलू के दरियाई घोड़े अंकल की आंखें लाल थीं. क्वेश्चन 3, गोलूज रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज फर्स्ट they were shy, second the question were too difficult, option 3 Golu was a naughty baby. इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, the question was too difficult. क्वेश्चन 4, who advised Golu to go to Limpopo river? गोलू को लिम्पोपो रिवर किसने जाने की सलाह दी? इसका आंसर है द मैना बर्ड एडवाइज्ड गोलू टू गो टू लिम्पोपो रिवर. मैना पक्षी ने गोलू को लिम्पोपो रिवर जाने की सलाह दी. क्वेश्चन 5, वाई डिड गोलू गो टू द रिवर? गोलू नदी पर क्यों गया? इसका आंसर है गोलू वेंट टू द रिवर टू फाइंड आउट व्हाट अ क्रोकोडाइल इज एंड व्हाट इट टेक्स फॉर डिनर. गोलू नदी पर यह देखने के लिए गया कि एक मगरमच्छ क्या होता है और वह रात्रि के भोजन में क्या खाता है. क्वेश्चन 6, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर. गोलू थॉट इट वॉज फर्स्ट अ लिविंग क्रोकोडाइल, सेकेंड अ डेड क्रोकोडाइल, थर्ड अ लॉग ऑफ वुड. इसका आंसर है थर्ड, गोलू थॉट इट वॉज अ लॉग ऑफ वुड. क्वेश्चन 7, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल? मगरमच्छ ने यह दिखाने के लिए क्या किया कि वह एक असली मगरमच्छ है? इसका आंसर है द क्रोकोडाइल शेड सम टीयर्स टू शो दैट इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल. मगरमच्छ ने गोलू को यह दिखाने के लिए कि वह एक असली मगरमच्छ है कुछ आंसू बहाए. क्वेश्चन 8, कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू. द क्रोकोडाइल सेड बिकॉज फर्स्ट he couldn't stand up, second he wanted to eat Golu, third Golu was deaf. इसका आंसर है सेकंड, he wanted to eat Golu. क्वेश्चन 9, who helped Golu on the bank of the river? किसने गोलू की नदी के किनारे मदद की? इसका आंसर है द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. अजगर ने नदी के किनारे पर गोलू की मदद की. क्वेश्चन 10, Name 2 things the animal can do with his trunk and 2 he cannot. उन 2 कार्यों के बारे में बताएं जो हाथी अपनी सूंड से कर सकता है और 2 कार्य जो वह सूंड से नहीं कर सकता. इसका आंसर है An elephant can put a lot of eatables in his mouth with the help of his trunk. He can also shower water on his body with his trunk, but he cannot chew with his trunk and he cannot sneeze with his trunk. एक हाथी अपनी सूंड से अपने मुंह में बहुत सी खाने की चीज़ें रख सकता है. वह अपनी सूंड से अपने शरीर पर पानी छिड़क सकता है, पर वह अपनी सूंड से चबा नहीं सकता और न ही सूंड से छींक सकता है. अब हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, लॉन्ग अगो द एलिफेंट्स हैड डैश. ऑप्शन ए a very long trunk, option B no trunk, option C no tusk, option D no tail. इसका आंसर है ऑप्शन बी no trunk. क्वेश्चन 2,
Golu asked the Maina what the crocodile had dash. Option A for breakfast, option B for lunch, option C for dinner, option D none of these. इसका आंसर है option C for dinner. Question 3. Who helped Golu on the bank of the Limpopo River? Option A giraffe, option B मैना bird, option C python, option D both B and C. इसका आंसर है option C python. Question 4. Golu was always full of dash. Option A jokes, option B tidbits, option C questions, option D none of these. इसका आंसर है option C questions. Question 5. Golu was a baby dash. Option A python, option B giraffe, option C hippopotamus, option D elephant. इसका आंसर है option D elephant. Question 6. Golu's trunk was dash. Option A 6 inches long, option B 1 foot long, option C as small as a boot, option D 5 feet long. इसका आंसर है option D 5 feet long. Question 7. Babook is a dash. Option A large African monkey, option B large Arabian monkey, option C large African or Arabian monkey, option D small Indian monkey. इसका आंसर है option C large African or Arabian monkey. Question 8. Golu before going to the river took with him dash. Option A 100 sugarcane, option B 50 dozen bananas, option C 55 melons, option D all of these. इसका आंसर है option D all of these. Question 9. Golu asked the hippopotamus why his eyes were always dash. Option A so red, option B so blue, option C so white, option D so yellow. इसका आंसर है option A so red. Question 10. Who stung Golu on his shoulder? Option A wasp, option B fly, option C bee, option D none of these. इसका आंसर है option B fly. Question 11. Golu meet the मैना bird dash. Option A in the middle of a bush, option B on the banks of Limpopo River, option C near Golu's house, option D none of these. इसका आंसर है option A in the middle of a bush. Question 12. How many advantages did the python count of Golu's long nose? Option A 1, option B 6, option C 3, option D none of these. इसका आंसर है option C 3. Question 13. Who asked Golu to go to the Limpopo River? Option A hippopotamus, option B ostrich, option C baboon, option D मैना bird. इसका आंसर है option D मैना bird. Question 14. Who was Golu's uncle? Option A hippopotamus, option B giraffe, option C ostrich, option D python. इसका आंसर है option A hippopotamus. तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है. अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 चांदनी करवाऊँगी. तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.